So now we'll start with elevation in boiling point and depression in freezing point. The next, like we have done with the vapor pressure of relative lowering of vapor pressure, the first colligative property. So to start with the elevation in boiling point and depression in freezing point, उसके लिए हम लोग पहले ग्राफ स्टडी करेंगे. प्लीज ध्यान से देखो. ओके, तो कंसिडर करो यहाँ पे जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 180 m and this is a vapor pressure diagram with temperature. Please note this is a vapor pressure diagram, like एक एक्सिस में वेपर प्रेशर है, एक एक्सिस में टेम्परेचर है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट आपको दिख रहा है, और यहाँ पे प्लीज नोट करना, हम कब बोलते हैं, कब बॉईल होता है कोई भी सोल्यूशन, जब उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 180 m. वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 180 m. तो ये पॉइंट आपको बॉइलिंग पॉइंट देगा और ये पॉइंट आपको फ्रीजिंग पॉइंट देगा. सो कंसिडर करो हमने अभी तक क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, तो ध्यान से देखना. सो दिस इज, सो ये पॉइंट क्या दे रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, दिस पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना. और ये जो पॉइंट है, प्लीज नोट करो, दिस पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है. तो इसको हम लोग सिंबल दे देंगे T0F और इसका सिंबल हो जाएगा T0B. ओके, अब हम लोग को क्या देखना है, जो हम बोल रहे हैं, बेसिकली व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच गेट अफेक्टेड बाय the addition of non-volatile solute. So now what happened if we add a non-volatile solute? अच्छा, एक एग्जांपल मुझे बताओ, अगर आइस है, आइस में अगर मैं सॉल्ट ऐड कर दूं, क्या इफेक्ट होगा? अगर मैंने आइस में सॉल्ट ऐड किया तो क्या होता है? नोट, वेनवी ने बोला है इट विल मेल्ट स्लोली. अक्षत ने बोला है स्टॉप मेल्टिंग. मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. होता क्या है कि जो रेट होता है मेल्ट होने का, वो स्लो हो जाता है, जल्दी मेल्ट नहीं होगा. इन शॉर्ट वी कैन से, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, क्यों वो मेल्ट नहीं होना चाह रहा है, वो मेल्ट क्यों नहीं होगा जल्दी? बिकॉज उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मैं आइस की बात करूं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो और कम हो जाती है, मतलब नेगेटिव में चले जाता है, तो उसको वापस जीरो में आने में टाइम लगता है, इस वजह से वो स्लोली मेल्ट होगा. करेक्ट. दैट मीन्स एडिंग ए सॉल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने क्लियरली बताया, प्रॉपर्टी खुद बताता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. Depression in freezing point, that means addition of solute will decrease the freezing point. Correct. मतलब
ध्यान देना यहाँ पे, ये पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये पॉइंट पे मैंने ऐड किया सॉल्यूट। नाउ आई एम एडिंग सॉल्यूट, अगर मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक पॉइंट तक डिक्रीज आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, तो अब ये क्या है, अब क्या बन गया वो, अब क्या बन गया, solution. After adding solute in the solvent becomes solution. So now it will be called as freezing point of solution. Freezing point of solution. तो आप देख सकते हो टेम्परेचर का डायरेक्शन ये है, और आप देख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, अब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो अगर अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, क्या हो जाएगा, यहां से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कब तक बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक वो बॉईल नहीं होता, है ना, हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। सो एक पॉइंट पे जाके जहां पे ये बॉईल हो रहा है 180 atm प्रेशर पे ये जाके बॉईल होगा। तो अब इस पॉइंट पे हम लोग को क्या मिलेगा, चेक करो, अब इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, करेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वेरी गुड। तो इसको सिंबल देंगे TB और इसको सिंबल देंगे TS। That means it is very clear, after adding a non-volatile solute, after adding a non-volatile solute, freezing point decreases and boiling point increases। जैसे कि नॉर्मल वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें आप शुगर डाल दो तो बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, इट विल गेट इंक्रीज above 100, correct, clear? And that is what the property which get affected by adding a non-volatile solute, and that property is said to be colligative property, correct, clear? Is everyone clear with this? And इनका जो difference होता है, please note the difference of the boiling point of solution and the pure solvent is said to be elevation in boiling point, and the difference between the freezing point of pure solvent and solution is said to be depression in freezing point, clear? समझा सबको? Okay, so as we have seen the T0B, TB, T0F and TF, so आपको बता दूं the difference, that is TB minus T0B is said to be elevation in boiling point, and T0F minus TF is called as depression in freezing point. Now, as you can see, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, because from this diagram we have seen that T0F is greater than TF. Similarly, from this we have seen that TB is greater than T0B. तो जो greater है वो पहले आएगा, because we are just finding the difference. So TB minus T0B, similarly T0F minus TF. Clear? And इसका जो symbol है delta TB is called as elevation in boiling point, and delta TF is a symbol for depression in freezing point. Is everyone clear with this? So it is seen that the delta TB is directly proportional to molality, as well as delta TF is directly proportional to molality. दोनों सेम है, ठीक है?
where M stands for the molality. So here we have two equations now. One is delta TB directly proportional to molality, and one is delta TF directly to molality. Now, if you remove the proportionality sign, we'll get equation delta TB is equal to KB into M. And similarly, delta TF is equal to KF into small m. Now, KB stands for abilioscopic constant. Abilioscopic constant. And KF is called as cryoscopic constant. Okay. Now, if I talk about the unit, as you can see, KB is equal to delta TB by M. Similarly, KF is delta TF by M. So the unit, if I talk about the unit of KB, क्या आएगा? Kelvin upon mole per kg, correct? That means Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. Similarly, आप यहाँ पे भी try करो, unit of KF is difference of temperature Kelvin में लेंगे divide by molality mole per kg. That is nothing but Kelvin kg per mole. And आपको बता दूं, हम kb को मोलाल elevation constant भी बोलते हैं. kb is also called as molal elevation constant, and kf is called as molal depression constant. Clear? Is everyone clear? kb is molal elevation constant and kf is molal depression constant. Okay. And the next we'll see, as we have seen, delta TB is equal to KB into M, and delta TF is equal to KF into M, where molality is equal to W2 upon M2 into W1 in grams multiplied by 1000. So we can substitute in the above equation. So equation जो मुझे मिलेगा delta TB is equal to KB into W2 into 1000 upon M2 into W1 in grams. Similarly, delta TF is equal to KF into W2 into 1000 upon M2 into W1 in grams. Clear? So this two equation will be used for the numerical solving. Okay, clear? Okay.